Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture number 2, and we will be discussing the design of singly reinforced beam in Flexure. I hope all of you can see. I hope all of you can see the slide and can also hear me clearly. Yes, sir. Okay, the topics to be addressed in today's lecture are the behavior of RC reinforced concrete beam under gravity load. Then we will be studying the mechanics of RC beam under gravity load, ACI Code Recommendations and design steps examples. So generally, these are the topics which we will be discussing in almost every lecture, depending on the property of for which we will be designing our beams or columns. Behavior of the section under gravity load, mechanics, and then ACI Code Recommendations, design steps and examples. So these will be generally our topics. The objectives of today's lecture are that at the end of this lecture, students will be able to explain behavior of reinforced concrete beam under gravity load, identify relevant ACI 318 code recommendations for RC beam, and also they'll be able to analyze and design RC beam for Flexure. Analysis we have already done. We will be studying the analysis in the context of reinforced concrete beam. First of all, this is an animation, and in this animation you will see how the beam undergoes deformation when it is subjected to gravity load. The animation when it goes down, so pay attention to this when the beam goes down, because when it goes down, it is the like this, or if you look at this picture, the beam undergoes flexure stresses, and there is elongation or tensile stresses at the midspan of the beam. And then when we move towards the columns, which are support for the beam, then the tensile stresses direction changes. The elongation which was going to happen in the bottom fibers of the beam at the center of the beam, then when we start moving towards the support or the column, the direction changes. If you look at the difference in the elongation of the beam at the support, we have elongation in the upper fibers instead of the lower fibers. So there is an elongation of the upper fiber. The tensile stresses are produced in the upper fibers of the beam, and in the midspan of the beam, the tensile stresses are produced in the lower fibers of the beam. So as we have explained in the previous lecture, if you have to reinforce this beam with steel bars, you will have to place steel bars at the bottom of the beam, at the midspan of the beam, and at the top portion of the beam, at the location where it crosses the column. Because if you look at this behavior of the beam when the beam is loaded here, so there is nothing below the beam in this location. Between the two columns, there is nothing at the midspan. So the beam will bend downward. When the beam bend downward, it is curvature downward. And downward curvature will create tensile stress in the lower fibers. However, at the location where the beam is crossing the column, the beam cannot come downward, and the column will keep the beam in the location where it was in the beginning before the application of the load. But when the beam comes down due to gravity load, this portion where the beam is supported on the column, this will be bent up, because this is one beam. So as long as the beam is not collapsed or not cracked substantially, so this behavior of the beam will be like an elastic material. The beam will bend up here at this location because it cannot come downward at this location. So to keep the beam up, the upper fibers of the beam must be in tension or must be elongated, and the lower fibers of the beam here in the midspan of the beam must be elongated. I will show you now a beam test where you will be able to clearly understand the behavior of RC beam subjected to flexure load only.
The response of such members at 3 different loading stages is discussed next. But before that, I will share with you a video of actual beam, where which we have prepared in our university. One of our final year project students, they have prepared this video, and this is a very useful video. You should pay attention to this video, and you should note down the response of the beam while it undergoes different loading stages. You can see in the beam, this is a simply supported beam. The beam is subjected to a point load at the midspan of the beam. The deflection of the beam is also recorded at the midspan. And the graph will be plotted between the load and the deflection of the beam at the midspan. With this magnifying glass, initially, since the cracks are very, very minor cracks, hairline cracks, so this student who is testing the beam is searching for any crack if there are. So the crack will be marked by a black marker, as you can see, and on the top of the crack, the load at which the crack has appeared will be written. This is a general practice in research that the load at which the crack appear is written on the top of the crack. So this load has appeared at a load of 30 kilonewton. Okay. Another crack has appeared, and you can also see the plot between load versus deflection at the midspan. The deflection are in millimeter. Initially, there was a straight line or linear relationship between load and deflection, but then slowly and gradually the curve between the load and the deflection bends. The bending means that the relationship between the load and deflection is no more linear. It becomes non-linear, and it is very obvious because as soon as the cracks appear, the non-linearity will begin, because before the crack appearance, the relationship between the load and deflection will be linearly elastic relationship. But after the appearance of cracks, the area of beam will decrease, the depth of the beam will decrease. So uncracked area, because the uncracked area will resist this load. Cracked cannot resist the load. And the reason is that the stresses cannot transfer across the crack. You can see now there are many cracks have appeared. And mind that this beam has been properly designed beam for flexure as well as for shear. So this is a properly designed beam for flexure and shear.
And this properly designed beam is tested under a point load at the midspan of the beam in order to see the behavior of the beam under the gravity load. You can also see now in the figure load versus deflection that the yielding of the steel has already occurred. You can see from the shape of the curve that yielding of the steel has occurred, and now the crack has entered. The cracks have entered now. Some of the cracks have entered into the compression zone as well, which will now be the final stage of the beam. Further increase in the load will cause widening of the cracks instead of initiating more cracks. Now in the graph you can clearly see the yielding of the steel has occurred, but the beam is still there. You should note down this, that yielding of the steel does not cause the collapse of the beam. After yielding of the steel, the beam is still capable of taking load, more and more load. Finally, there is crushing of concrete in the top portion, and now the test ends at this location, at this stage. When the concrete crushes in the compression zone, you can see the crushing of concrete. Substantial crushing of concrete has occurred in the compression part, the beam. You can also see now a substantial deflection of the beam, which is very visible. The beam still didn't collapse, or by the collapse, I mean to say that the beam did not split into two pieces. Okay, the beam was still hanging, and this is the final outcome of the. Okay. Now we will study. I will show you this video once again because this is a very, very important video. In order to understand the behavior of the beam under gravity load, we will be discussing several important concepts under which, through which the beam undergoes during different stages of loading in the next slides. But before that, I would like that you watch the video once again. This is basically the data of the beam. The beam is 12 inch deep and it is 8 inch wide. The width of the beam is 8 inch. The depth is 12 inch. The length of the beam is 7 feet. There are number four bars in the beam placed longitudinally is bottom and on the bottom side of the beam. And the exterior spacing is 5 inch center to center. And the calculated load capacity according to the ACI code is 90 kilonewton. This is calculated load capacity. You will be able today, after the lecture, that to calculate the load capacity is according to the ACI code. Okay, and one is the capacity as per the equations of ACI code, but one is the actual load capacity. So this is the calculated load capacity, and actual load capacity will come from the test. Now, I will run the video. You should watch this once again carefully. And if you want, you can also note down some questions and we can discuss these questions after the video. The load increment is 5 kilonewton, which means that corresponding to every 5 kilonewton increase in the load, the deflection is noted.
one thing that I would like you should note down that even after the appearance of number of cracks, the beam is still there. It has not collapsed, and it is still capable of taking more and more load. We should note down that with the appearance of one or two cracks in the beam is not going to collapse. It can take more load, and still the beam can be repaired afterwards. Okay. So the video ends here. Now we can discuss. सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये स्टूडेंट जो वैल्यूज लिख रहे हैं बीम पे, सर ये किस चीज़ की वैल्यूज है? जी सर ये वैल्यूज जो जरा ये जोर से आप बोलें। सर ये स्टूडेंट जो वैल्यूज लिख रहे हैं बीम पे, सर ये किस लोड चीज़ की? ये तो लोड की वैल्यूज हैं। जिस लोड पे ये क्रैक आ जाता है ना, तो उस लोड की वैल्यू को लिखते हैं क्रैक के ऊपर। ये किलो न्यूटन में वैल्यू है। ओके सर। ठीक है सर सर ये 5 किलो न्यूटन के बाद लिखते हैं सर। सर। हाँ जी, हाँ 5 किलो। आप किसी भी लोड इंक्रीमेंट पर डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी चेक करेंगे तो मुश्किल होगा, और अगर गैप बहुत ज़्यादा देंगे तो आपके लोड और डिफ्लेक्शन के ग्राफ में फिर एक गैप आएगा। तो 5 किलो न्यूटन इज ए रीजनेबल इंक्रीमेंट ऑफ लोड एट विच यू कैन मेजर योर डिफ्लेक्शन। ठीक है सर जी, प्लीज आपका नाम? सर इसमें जो कायम शाह। ओके प्लीज। सर इसमें शेयर क्रैक्स और फ्लेक्सर क्रैक्स किस तरह हम मतलब हमें पता चलेगा कि वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? और नहीं, इसमें जो टेंशन क्रैक्स है उसका भी थोड़ा सा बता देते जब आप अच्छा, डिस्कस ठीक। कर रहे हैं। अगर बीम के बिहेवियर को आप देखें ना, जिस तरह मैंने आपको एक एनिमेशन से समझाने की कोशिश की कि अगर किसी बीम को आप लोड करें ग्रेविटी लोड से, तो बीम नीचे बेंड होगा
और बेंडिंग से उसके नीचे के जो फाइबर्स हैं, बॉटम फाइबर्स, वो इलांगेट होंगे, स्ट्रेच होंगे, और ऊपर के फाइबर्स कंप्रेस होंगे. दिस यू नो वेरी वेल, यू वुड हैव स्टडीड दिस इन द फ्लेक्सर स्ट्रेस फार्मूला डेरिवेशन. ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आपके जो नीचे के फाइबर्स होंगे वो इलांगेट होंगे जब आप किसी भी, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो बीम कंक्रीट का बना हो, किसी भी चीज़ का बना हो. तो ये तो एक जनरल बिहेवियर है कि द बॉटम fibers or the bottom portion of the beam will elongate or stretch, and the top portion of the beam will shorten or compress. Elongation आप समझते हैं कि ये it increases the length of that portion. तो जब किसी चीज़ की लेंथ इंक्रीज होती है तो it is an indication that tensile stresses have been produced at that location. Because in the absence of tensile stresses are pulling, because tension, आप जानते हैं कि pulling forces जो हैं in the opposite direction, जब दो forces pull करते हो किसी मटेरियल को, तो उससे वो मटेरियल या मेंबर इलांगेट होगा. उसके बगैर हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास टेंसाइल फोर्सेस या पुलिंग फोर्सेस ना हो, अपोजिंग पुलिंग फोर्सेस जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करें, तो उस वक्त तक इलांगेशन मुमकिन नहीं है. ये तो आप समझते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे बीम के फाइबर्स की इलांगेशन होती है या उनके जो लेंथ में इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी इंडिकेशन है कि नीचे हमारे पास टेंसाइल फोर्सेस हैं, और ऊपर जो हैं बीम के जो फाइबर्स हैं उनकी शार्टनिंग होती है, तो ये इंडिकेशन है कि ऊपर कंप्रेशन है. और फ्लेक्सर स्ट्रेसेस कहते ही उन स्ट्रेसेस को हैं कि जो एक ही मेंबर में दो मुख्तलिफ जगहों पर कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाएं, तो उसको हम फ्लेक्सर स्ट्रेसेस कहते हैं. और ये सिर्फ बेंडिंग की वजह से हो सकता है. इस तरह का आपने देखा बीम बेंड हो रहा है, बिटवीन द टू सपोर्ट्स द बीम इज बेंडिंग. यू नो द बिहेवियर ऑफ द बीम इन बेंडिंग. कि बेंडिंग में बीम का बिहेवियर ऐसे होता है कि नीचे के फाइबर्स इलांगेट होते हैं और ऊपर के फाइबर्स की शार्टनिंग होती है. तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली in one portion of the beam, in the top portion of the beam, in this particular case, the beam is being compressed, and in the lower part of the beam is being elongated. So इस combination की जब इस combination में stresses किसी member में मौजूद हों, तो उसको हम flexure stresses कहते हैं. और because the flexure stresses are produced due to bending, तो इसको bending stresses भी हम कहते हैं. ठीक है. अच्छा, this is only going to happen in a simply supported beam, या between the supports किसी beam में इस किस्म का behavior होगा. लेकिन अगर आप किसी cantilever beam को imagine करें, तो in a cantilever beam the tensile stresses will be produced in the upper part of the beam. For example, let's say this is a cantilever beam. So in a cantilever beam, when it bends, so the upper part of the beam will be in tension. Because of this bending, this part is going to elongate, and the lower portion of the beam will be in compression. Okay. So once we understand this basic behavior of the beam, then the rest of the things are easy to understand. Okay. So now coming to the flexure stresses and shear stresses. Flexure stresses are the stresses which I just tried to explain to you, that the combination of compressive stresses and tensile stresses at one and the same time in different locations of the beam due to bending are called as flexure stresses. Okay, now if you look at the elongation of the beam in the lower fibers of the beam, the elongation is occurring along the length of the beam. Okay, the elongation of the fibers of the beam in the lower part of the beam is basically along the length of the beam, along the length of the beam. Okay, and also the compression stresses are also along the length of the beam in the upper part of the beam. So when you try to pull two pieces in the opposite direction, for example, these are two pieces of a beam which have been
which have been glued together, let's say, which have been glued together with a glue. These are two pieces of the beam which have been glued together with a glue. Now, if you try to pull these two pieces apart in this, with this pulling force P in the opposing direction, what will be the result? The result will be opening of this location, opening of this glued location, and the direction of the opening will be perpendicular to direction of the force P, isn't it? Because you are pulling this, so a crack will appear, or a crack means a gap between the two parts. So a gap or crack will appear perpendicular to this force P. So now if you have noticed, all the cracks are primarily perpendicular in direction, perpendicular in the direction of the stresses. As I said earlier, in the lower part of the beam, there will be tensile stresses, and these tensile stresses are acting along the length of the beam because the elongation is also occurring along the length of the beam. So when the tensile stresses will stretch the beam fibers in the opposing direction, a crack will appear perpendicular to the direction of tensile stresses like this. This is a beam. So you can see the lower fibers of the beam, they are being stressed in tension. So this stress in tension will create a crack. There will be many stress component like this. So a crack will appear perpendicular direction of these tensile stresses. Okay? Because the crack, as I said earlier, it is an opening or gap between the two parts. And when you try to apply two opposing forces in a member, it will produce a crack or gap. Okay, if the beam, if the pulling forces exceed the tensile capacity of the member, then a crack will appear perpendicular to the direction of the tensile stress. So you have noticed that all these cracks were in the direction perpendicular to the direction of the stresses, or all the cracks were along the depth of the member and perpendicular to the direction of the length of the member. This is the length of the member, this is length of the member. And the cracks are perpendicular to this. Cracks are perpendicular because the tensile stresses are perpendicular. The tensile stresses are along the length, and the crack is perpendicular to the direction of tensile stresses. So these are flexure stresses because the tensile stresses have been produced by bending of the beam. And as I said earlier, the bending stresses are called flexure stresses. So these are flexure stresses, not shear stresses. Okay. The next question from my side to you is that if a crack appear in a wooden beam, what naturally we would like to do with this beam? If a crack appears in a wooden beam, let's say the beam is made of timber. This is a timber beam, and a crack appears. For example, let's say we are going to place some load in our home, and the situation is such that there is a timber beam which is being kept between two supports, and we are going to load the beam with some let's say bags, sand bags, or floor bags, or cement bags, and a crack appears at the bottom of the beam. What naturally we would like to do to increase the load carrying capacity of the beam in order to avoid the collapse of the beam? What naturally we would do? This is a question. Sir, yes, sir, we can stitch the beam by using a steel plate of certain thickness or width, sir. दोबारा बताएं. सर हम स्टील प्लेट यूज कर सकते हैं, उसको स्टिच कर सकते हैं सर, उस क्रैक को. किस तरह करेंगे जरा बताएं. This is interesting. सर अगर हम
अगर हम सर बोर्ड यूज करें या पेन्स यूज करें उसका क्रैक को कवर करने के लिए किसी स्टील प्लेट से, तो हम हाँ। उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बस स्टील प्लेट सर। और उसके क्या फायदा होगा जरा बताएं। सर जो क्रैक प्रोड्यूस हुआ है तो वो उसको सर कवर कर देगा और वो नेचुरली एंड करेगा सर। वो जो स्टील प्लेट हम उसके ऊपर लगा देंगे तो वो क्रैक कवर हो जाएगा और फर्दर जो क्रैक होगा वो इंक्रीज नहीं होगा सर, वो यस, वेरी कंप्रेशन गुड। जोन तक सर। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि आप नेचुरली अगर घर में इस किस्म का कोई हमारा लकड़ी का बीम हो, कोई लकड़ी का तख्ता हो और जिस पर हमें कोई वज़न रखना हो, लेट्स से कि कोई सीमेंट की बोरियां हैं और हम चाहते हैं कि सीमेंट की बोरियां हम तख्ते के ऊपर रख दें ताकि नीचे वो फ्लोर से फर्श से वो मॉइस्चर न ले और हमने उसके ऊपर रखनी है, या आटे की बोरियां रखनी है हमारे पास स्टोरेज बढ़ाने के लिए, हमने इस तरह एक लकड़ी का तख्ता रख दिया और उसमें क्रैक आ गया तो जनरली हम क्या करते हैं, ये दिस कॉमन सेंस कि हम कोई स्टील की थोड़ी सी छोटी सी पट्टी वगैरह देखते, एक स्ट्रिप ऑफ स्टील वो ले लेते हैं और हम अक्रॉस द क्रैक आप उसको नेल करेंगे, उसके साथ बाइंड करेंगे अच्छी तरह से, और जब आप मजीद लोड बढ़ाएंगे तो फिर अक्रॉस तक क्रैक तो आ गया है। तो अब जब क्रैक आ गया तो टिम्बर के जो 2 पीसीस हैं अक्रॉस द क्रैक के आर पार, तो वो तो अब स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि अब तो वो तो एक हिस्सा नहीं रहे, वो तो 2 हिस्से हो गए। अब आपने जब उसके ऊपर स्टील की पट्टी लगा दी या स्टील की कोई प्लेट लगा दी और अच्छी तरह से उसको फिक्स कर दिया, इस तरह फिक्स करेंगे कि जब आप टिम्बर बीम पर लोड अप्लाई करेंगे तो अक्रॉस द क्रैक जो आपने टिम्बर पीस लगाए, मैं अगर आपको इसको ड्रा करता हूँ थोड़ा सा ताकि आप मज़ीद समझ जाएं तो फिर आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक टिम्बर बीम है और इसमें एक क्रैक इधर आ गया तो मैं इसके ऊपर एक ऐसी पट्टी छोटी सी लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैं नेल्स लगाता हूँ, इस तरह से कील लगाता हूँ, और ये कील मैं ऐसे लगाऊंगा कि स्टील की पट्टी और टिम्बर के दरमियान कोई रिलेटिव मूवमेंट ना हो। जब मैं इस पर लोड अप्लाई करूंगा तो ये बिल्कुल इसका हिस्सा बन जाए और इसमें इसके साथ अच्छी तरह से फिक्स हो। अब क्या हो गया, जब मैं इसके ऊपर मजीद लोड अप्लाई करूंगा तो अक्रॉस द क्रैक तो टिम्बर तो खत्म हो गया क्योंकि अक्रॉस द क्रैक तो टिम्बर अब 2 पीसेस हैं, लेकिन अब ये चीज़ मौजूद है, स्टील की पट्टी मौजूद है। अब क्या होगा कि स्टील की पट्टी दोनों साइड पे, क्योंकि उसने क्रैक के अक्रॉस हमने ये स्टील की पट्टी लगाई हुई है, तो अब जब लोड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये स्टील की पट्टी लोड लेगा, टिम्बर कोई लोड नहीं ले सकता इस जगह पर। और स्टील की नेचुरली जब उसकी स्ट्रेंथ टिम्बर से ज़्यादा है तो इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी का ये है कि क्रैक मजीद नहीं बढ़ेगा तो लोड हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर क्रैक मजीद बढ़ेगा और क्रैक ऊपर चलता जाएगा तो बीम फाइनली ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा या 2 हिस्सों में 2 टुकड़े में तकसीम हो जाएगा। अगर वो हम नहीं चाहते तो हमने इस क्रैक को किसी तरीके से रोकना है, और रोकना किसी तरीके से ये एक कॉमन सेंस सोल्यूशन है कि हम अक्रॉस द क्रैक स्टील की पट्टी इस तरह लगा दे तो मजीद क्रैक नहीं बढ़ेगा और स्टील लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने से फिर स्टील खुद ब खुद स्टील की यील्डिंग हो जाए, ये मुमकिन है, ठीक है, या स्टील के जो नेल्स हैं ये डैमेज हो जाए और स्टील की पट्टी और टिम्बर के दरमियान रिलेटिव मूवमेंट शुरू हो जाए तो फिर तो बस ये फिर फेल हो जाएगा। तो यही टेक्निक, द सेम टेक्निक वी विल बी यूजिंग इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। हम जहाँ पर क्रैक्स मुमकिन हो आना उसमें हम स्टील का एक राड लगा देते हैं या स्टील का बार लगा देते हैं। इसे हमने देख लिया कि क्रैक्स ऐसे आ रहे थे, तो हम क्रैक्स लगाने से पहले, क्योंकि कंक्रीट की बीम में तो आप नेल्स से बाद में स्टील का राड नहीं लगा सकते ना, तो हम स्टील का राड पहले से लगा देते हैं और कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड की वजह से वो स्टील इसमें अच्छी तरह से इस जगह पर फिक्स हो जाता है। और जब इनिशियल क्रैक इधर से नीचे आ जाता है तो अब क्रैक मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इधर स्टील का जो राड है वो काम करेगा और क्रैक को मजीद बढ़ने नहीं देगा, और इसकी वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी बीम की बढ़ जाएगा। इसमें कोई स्टील बार ना हो, जब हम इस बीम को लोड करेंगे तो क्या होगा कि एक क्रैक इधर आ जाएगा और बस बीम 2 टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि प्लेन कंक्रीट, आई हैव सेड दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स नाउ, ए प्लेन कंक्रीट इज वेरी वेरी वीक इन टेंशन, और जब ये नीचे बीम का पोर्शन है ये टेंसाइल स्ट्रेसेस इसमें प्रोड्यूस होंगे और इसमें स्टील बार ना हो तो बस ये बहुत सडनली
इसमें क्रैक आके इसको 2 पीसेस में टुकड़े कर देगा और बहुत कम लोड पर ये होगा, बहुत कम, थोड़े से लोड पर ये हो जाएगा। और जब इसमें स्टील बार डाल देंगे तो अब जिस तरह मैंने टिम्बर पीस और स्टील स्ट्रिप की मिसाल आपको दी, ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा कि इनिशियली क्रैक तो थोड़ा सा आ जाएगा नीचे, लेकिन मजीद ये क्रैक बढ़ेगा नहीं, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये स्टील बार जो है अब ये लोड लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ये बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं आएगा। जब आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो स्टील की खुद भी एलांगेशन होगी। यू अंडरस्टैंड दिस कि स्टील विल नाउ कीप ऑन एलांगेटिंग, और स्टील की एलांगेशन और कंक्रीट की एलांगेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड आपस में ऐसे है कि वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव स्लिप नहीं हो सकता, यानी स्टील कंक्रीट के अंदर स्लिप नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा कि स्टील में भी इलांगेशन होगी और वो इलांगेशन स्टील और कंक्रीट में बराबर होगी। जब स्टील में इलांगेशन होगी तो साथ कंक्रीट भी इलांगेट होगा और कंक्रीट में उस जगह पर क्रैक आ जाएगा और ये क्रैक फिर आगे ऊपर मूव करता जाएगा, आगे मूव करता जाएगा। और जब आप जैसे जैसे आप मजीद लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये क्रैक ऊपर चलता जाएगा और नीचे क्या होगा, नीचे स्टील मजीद इलांगेट होगा और आप स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आप ने कई दफ़ा पढ़ा होगा कि जब ये अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पर और यील्ड स्ट्रेंथ पर पहुंच जाएगा उसके बाद स्टील की यील्डिंग शुरू हो जाएगी। तो इधर यील्डिंग शुरू हो जाएगी, क्रैक, उसके बाद क्रैक मजीद वाइडन होना शुरू हो जाएगा ये नीचे, ठीक है ना। लेकिन क्रैक ऊपर बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, और नीचे जो अब नीचे तो स्टील यील्ड हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर जो है कंक्रीट कंप्रेस हो रहा है, और आखिर में क्या होगा कि कंक्रीट जो है जहाँ पर मैक्सिमम फ्लेक्चर स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इस जगह पर कंक्रीट क्रश हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, एंड बीम जो है फाइनली इट विल रीच इट्स फ्लेक्चर कैपेसिटी। So this is the basic concept of a beam under gravity load and how the flexure stresses are produced and how we are going to enhance the flexure capacity of the beam. With this concept now we will move ahead. If you have any question, you can ask your question, otherwise we will move ahead because this is enough explanation at this stage. Any question at this stage? No, sir. Okay. Then there are many stages through which the beam undergoes from the start of the load to the end of the load. But we will discuss only 3 stages which are very clear and distinct, and they are important from our discussion point of view. There is a stage in the beginning where the beam is completely uncracked. You have seen this stage because the student who was testing the beam was searching for some cracks and there were no cracks. So in the beginning, there are no cracks. However, the load corresponding to this stage is very small. So it loads much lower than the ultimate. Ultimate load is the load at which the beam finally breaks or collapses. So that will be called as ultimate load. So it loads much lower than this ultimate load. Concrete remains uncracked in compression as well as in tension, and the behavior of steel and concrete both is elastic. So this is stage number 1. And we have seen this stage, that concrete does not crack on the tension side as well as on the compression side. The beam is completely uncracked. This is the initial stage, stage number 1. This we will discuss. The internal behavior of the beam at this stage will be discussed in the next slides. Then there is a stage number 2. The stage number 2 is a stage that when the load is increased, concrete cracks in tension side. We've also seen this, but remains uncracked in compression side. So the cracks have not reached the compression zone, and the cracks have appeared in the tension zone. This is the zone at which the concrete in compression is uncracked, but concrete on tension side is cracked. However, at this stage, the concrete in compression and steel in tension both behave in elastic manner. Concrete in the compression zone has not cracked, so it has not crossed its elastic limit. We will see this in the coming slides. And steel is below the yield. So when steel is, as long as the steel is below yield, it is in the elastic stage. The final stage, our third stage, is a stage where concrete has cracked substantially. The concrete in tension is already cracked in stage 2. However, concrete in compression
and steel in tension both enters into inelastic range, and at collapse, the steel yields and concrete on the compression side crushes. We will now study these three stages in very detail. So you should pay attention to this, because this will build your concept in the flexure design of the beam. Okay, this is stage number one. Pay attention to this stage. The load is lower than the ultimate, is much lower than the ultimate. Okay, this is the internal situation of stresses. The beam has not collapsed. Okay, the beam has not collapsed. We have separated one part of the beam from another part of the beam just to show you the internal stresses in the beam, how the internal stresses will be created inside the beam. The internal stresses will be created in this manner. In the upper part of the beam, you can see the compression forces are applying along the length of the beam, and they are maximum in the top fibers of the beam. And the tensile forces are acting in the tensile forces are produced in the lower part of the beam. Tensile force divided by the area will be called as tensile stress, and the compressive force divided by the area is called as compressive stress. So when I say compressive force or compressive stress, is one and the same thing. Just in the compressive stresses, the compressive forces are divided by the area. Okay, so you can also see that at the mid span, at the mid depth of the beam, there are no forces acting, or there are no stresses, and this is called in the neutral axis at which there are no stresses, and there will be no elongation and no shortening of the fibers of the beam at this location. This is the beginning. This is the stress position or stress state in the beginning of the test or the beginning of the load. Okay. Now, the upper part of the beam has a triangle with the compressive force, maximum compressive force in the upper part of the beam, and then the forces or stresses are decreasing slowly and gradually till they become zero at the neutral axis, and then tensile stresses are produced, and tensile stresses are then keep on increasing till the bottom fibers of the beam, and they are maximum in the bottom fibers of the beam. Okay, so the variation of compressive stresses and tensile stresses both are triangular in shape. So this triangular shape of the stresses can be represented by a compressive force in the upper part of the beam and tensile force in the bottom part of the beam. You would have done such kind of things in your mechanics of material courses. So if we now separate this like this, and then look at this from one face, from this side, from the side of the beam. If you look at this, then we will just see. If I look at this shape of these triangles from this direction, then I will see like this. These are compressive stresses and these are tensile stresses. So these compressive forces can be represented by compressive force C, which is the resultant of this, and tensile stresses can be presented by tensile forces, which is the resultant of these tensile stresses. Okay, just to differentiate that, compressive forces are acting such that they cause compression in the beam fibers, and tensile stresses are producing elongation in the bottom fibers of the beam. We will draw this compression and tension on the opposite side of this vertical line for simplicity, like this. So this is now tension, and this is compression. T and C. Okay. So next we will. You can also see that maximum compressive stresses occur in the upper part of the beam, and maximum tensile stresses occur in the lower part of the beam. And as we move towards the mid depth of the beam, both the compressive and tensile stresses will keep on decreasing till they finally become zero at the mid depth.
which is called as the neutral axis. Okay. So now finally, if we start writing equations for this stress state, you can see that this is the beam. These are some reinforcement in the beam, because this is a reinforced concrete beam behavior. This is the width of the beam, and this is the depth of the beam. Okay. The depth of the beam from the top fibers of the beam or top part of the beam to the centroidal axis of this reinforcement, which is being placed in the lower fibers in order to enhance the flexure capacity of the beam, will be called as D, or effective depth. This will be called D, or effective depth. Effective depth of the beam. We will discuss this in detail in the coming slides. Okay, the strain diagram will be like this. You have compression strain in the top fibers and tensile strains in the lower fibers. Okay, then coming to the stress diagram, this is strain diagram, and this is a stress diagram. You can see the flexure compressive stress in the top fibers of the beam, which are shortening the beam fibers above the neutral axis, and you can see the tensile stress in the lower part of the beam, with the maximum tensile stress occurring in the bottom of the beam. Okay, and then we can also correlate the stress, this stress part, the compressive stress part, with the concrete compressive stress strain diagram. This is a compressive stress strain diagram here. This one. This is the compressive stress strain diagram of concrete. So FC in the beginning of the load, in the beginning of the test, in a very low load as compared to the ultimate load of the beam, the stress in concrete on the compression side is also here, and this value is very, very small as compared to the compressive strength of the beam. So we are here, and this stage is almost linear. The stress and strain relationship between the relationship between stress and strain for concrete is also linear, because we are here at this stage. This is an assumption that in the beginning, this is a stage. It is possible that this stage occur in the beginning at some point of time. Okay. Then we have on the tension side. On the tension side, we are at this stage, and this is a stage. This is a stage at which the concrete will start cracking in tension. Okay, so this is the maximum tensile stress in concrete before cracking. Okay, this is the maximum tensile stress before cracking. Okay, and if you remember, in one of our previous slides, we have discussed the modulus of rupture or flexure tensile strength of the beam. If you remember, for a point load, or a beam subjected to a point load like this, and we said that the flexure strength of the beam, flexure tensile strength of the beam, can be calculated from the flexure stress formula. Fr is equal to 6m divided by bh square. Fr is equal to 6m divided by bh square. This was a case for a plain concrete beam, where the flexure strength and tension was calculated, and this was basically, if you remember, I also told you that this was the flexure tensile strength for a plain concrete beam is basically called as modulus of rupture or measure of rupture. Okay, this modulus of rupture, Fr or Ft, is given by the ACI code equal to 7.5 times Fc prime. If you remember, I also said in the previous lecture that the tensile strength of the beam is directly proportional to the square root of compressive strength, not the directly compressive strength. And the ACI code has given us an equation that in the absence of any test, the flexure tensile strength of the beam will be 7.5 times the square root of Fc prime. Okay, or it is also called as the modulus of rupture. So this if this Ft, if we are able, let's say, to calculate this Ft, then when this Ft exceeds 7.5 Fc, a crack will appear here. Okay, because Fr, which is the modulus of rupture or the flexure tensile strength of concrete, so a crack will appear as soon as Ft exceeds 7.5 times Fc prime, 7.5 times square root of Fc prime. Okay,
Now we move ahead to see what else happens. Okay, now the same stage 1, corresponding to the same stage 1, we can write down the resultant C, which is the resultant force C, and the resultant force T. Okay, in the bottom fibers we have resultant force T, and in the upper fibers we have resultant force C. You know that stress is equal to P divided by area, and P is equal to stress into area. P is equal to stress into area. At this stage now, when this force C is there, so C multiplied by stress into the area. Which area is in compression? The area above the neutral axis is in compression. This part is in compression of the beam. This part is in compression. And this is B. If the B is breadth of the beam and H is depth of the beam, so this is BH by 2. BH by 2 is the area. And what is the stress? The stress is maximum in the top fibers and 0 at the neutral axis. So the average stress will be taken here. And average stress will be FC plus 0 divided by 2. So C will be equal to FC plus 0 divided by 2, which is 0.5 FC, multiplied by BH by 2, which is also 0.5 BH. So C will be equal to 0.5 FC. You can see now in this. C is equal to 0.5 FC into B into 0.5 H. This is the compressive force. Similarly, the tensile force will be FC will be changed with FT because we have tensile stresses in the bottom fiber. So T will be equal to 0.5 FT into B into 0.5 H. Under this condition now, C must be equal to T. C must be equal to T according to the principle of mechanics, that internal forces, summation of internal forces must be equal to 0. So C minus T will be equal to 0, or C must be equal to T. Okay, C must be equal to T. When C is equal to T, this is the relationship from which you can see what happens. When C is equal to T and FC is equal to FT, FC will also be equal to FT. This FC will also be exactly equal to this FT because the stresses are in the linear elastic range. So FC will be equal to FT. FC will be equal to FT. Okay. And then you have an internal couple. This internal couple M will be equal to what? This will be equal to T times this lever arm or C times lever arm. What is the same thing? Because we are interested in the tensile stresses of the beam, not in the compressive stresses, because the beam is not going to fail in compression. The beam will fail in tension. So we will write down M, which is the internal couple, in terms of T times 2 by 3H. T times 2 by 3H. What is this M? This M is basically the flexure capacity of the beam. Flexure capacity of the beam. Okay, flexure capacity of the beam. And this internal couple is going to resist the applied bending moment. When the beam is loaded by a load P, it will produce a bending moment which is called as demand bending moment. This will be equal to, let me explain this a little bit. When a beam is loaded by, let's say, a point load P in this case, or any load UDL, uniformly distributed load. So this P will produce P by 2 forces and a bending moment P by 2 into L by 2. So this will be PL by 4. This is M, which is called as demand bending moment. This bending moment is being produced by what? By load. Okay, and this bending moment will depend on a situation because load is not in our control. A particular situation will create this load. A particular situation will demand that this load should be equal to this much P. Okay, so the demand will be created by a particular situation and it is not in our control. P is a demand. This is demand equal to PL by 4. L is the length of the beam and P is the load, the applied load of the beam.
So with the increase in length of the beam and increase in P, M will increase. Okay. This bending moment, which is produced by load P, okay, must be this bending moment M produced by this load P must be resisted internally by the beam, and the internal couple that we were discussing, this internal couple M is going to resist the demand which is produced by load P. So when this internal bending moment, which we will call now resisting bending moment, MR, when this bending moment, which is internally resisting the demand bending moment M produced by P, when this MR is greater than the demand bending moment, then the beam will not collapse, the beam will be able to carry the load. And when this MR is less than the demand bending moment, the beam will crack. Okay, in the case of a beam where there is no reinforcement, so this MR will be completely coming from concrete in tension. This T is coming from concrete, T tension in concrete, and 2/3 is the lever arm. This will give us this MR. However, if we place reinforcement in the beam, this T will not only come from concrete, this will also come from steel. So T will be combined tension from steel and concrete, and in this way MR will be increased. Okay, when MR is increased, we say that flexure capacity is increased. The flexure load carrying capacity is increased because M is bending moment. Bending moment is produced by bending of the beam. When the beam is subjected to load P, the bending moment M, which is in the form of demand, M is equal to PL/4 is produced. And this bending moment M is equal to PL/4 shall be resisted by the beam internally. And when we look into the mechanics of the beam internally, this MR is equal to T into 2/3H is that internal resisting bending moment, which must be greater than the demand bending moment in order to safely carry this load. However, in the case of a pure concrete beam, this T will be contributed only by concrete, and this will be very, very small value. As I said several times, that this T will come in, the concrete is very weak in tension, so the T value will be very small and MR will be very small if concrete is made of if beam is made of pure concrete, plain concrete. However, if reinforcing bars are placed in the lower part of the beam, so this tensile force will be produced, or the tensile stresses will be produced not only by concrete but also by the steel bars, and the T value will be in that case very, very high. MR value will be very high, and in this manner MR will be increased. When MR is increased, we say that the bending moment capacity is increased. Bending moment capacity and the flexure load carrying capacity is one and the same thing. So in this way, we will be increasing the flexure load carrying capacity of the beam. In this stage, when there is no contribution from steel, so what will be the equations that will be used at this stage? Now you should pay attention to these equations. If you have any question at this stage, you can ask a few questions. I hope this is very clear. It is very straightforward. It is very clear. Yes, sir. My name is Shah Khalid. Okay, please. सर जब ये MR इक्वल टू M के बराबर होगा तो फिर बीम कोलैप्स करेगा या नहीं? MR जब उसके बराबर होगा तो कोलैप्स नहीं करेगा, उसके जैसे ही थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो बस कोलैप्स करेगा. Excuse me, sir. My name is Mohammed Tarkhan. सर ये 2/3 अच्छा एक मिनट ये शाह खालिद का क्वेश्चन मैं जरा दोबारा इसको समझा दूं. अगर आप 100 किलोग्राम वेट उठाने के काबिल हैं
और आप 100 किलोग्राम वेट उठा लें तो आप कोलैप्स करेंगे कि नहीं? नो सर। बस दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके ओके सर, थैंक यू। जी, आप क्वेश्चन करें। सर मैं पूछ रहा था कि 2/3h ये किस तरह है सर, ये अच्छा ओके, डिस्टेंस? 2/3 किस तरह आया कि ट्राइंगल में जब आपका जो रिजल्टेंट एक्ट करता है वो लार्ज साइड ऑफ द ट्राइंगल से 1/3 से एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ना न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ये h/2 है, ठीक है, और ऊपर भी h/2 है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल मिड डेप्थ पे है। तो ये जो रिजल्टेंट आपका t एक्ट कर रहा है ये 1/3 ऑफ h/2 है। तो क्या मतलब 1/6 ऑफ h, करेक्ट। और ऊपर भी ये 1/6 ऑफ h है क्योंकि ये 1/3 ऑफ h/2 है, तो ये भी 1/6 ऑफ h हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास h है, टोटल डिस्टेंस h है। टोटल डिस्टेंस h से जब आप -1/6 h नीचे और 1/6 h ऊपर माइनस करेंगे तो क्या मतलब 1/3 h माइनस करेंगे। तो h से जब आप 1/3 h माइनस करेंगे तो आपके पास 2/3 h रह जाएगा, ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ये 2/3 h जो है ना ऊपर से आप 1/3 h ऊपर 1/3 h नीचे, आप जी 1/6 h प्लीज। सर ये जो एक्सपेरिमेंट में जब क्रैक वाइडनिंग शुरू हो जाता है तो इस वक्त बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है या फिर भी मतलब थोड़ा रहे? नहीं, आपने देखा ना क्या हो रहा था, आप तो मुझे खुद इसका जवाब आप दें, क्या हो रहा था? बीम लोड ले रहा था कि नहीं? उसके बाद बीम लोड ले रहा था कि नहीं? नहीं, उस वक्त मुझे समझ नहीं आई ना कि वो नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब क्रैक आ गया तो बीम मजीद लोड ले रहा था कि नहीं ले रहा था? नहीं, मैं क्रैक की बात नहीं कर रहा सर, क्रैक वाइडनिंग की बात कर रहा हूँ। क्रैक अच्छा, बिल्कुल फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज पे। यस सर, फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं आप? यस सर, यस सर। क्रैक वाइडनिंग, अच्छा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। फाइनल स्टेज में इसको मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। अच्छा, अब बिगिनिंग स्टेज में हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं। इस इक्वेशंस को मैं एक और स्लाइड पे, वाइट स्लाइड पे आपके लिए जरा लिखता हूँ दोबारा। अब ये इस स्टेज नंबर 1 पे जो इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे, अगरचे स्टेज नंबर 1 पे हम कोई डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स से कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई कि आपने एक ऐसे बीम को डिज़ाइन करना है कि जिसमें कोई रिइंफोर्समेंट नहीं है, या आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई क्रैक ना आए, तो ये बिल्कुल स्टेज नंबर 1 की इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेज नंबर 1 की इक्वेशन को ज़रा आप अटेंशन दें कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसमें जो इक्वेशन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसमें ये मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम है, ये C है और ये T है, ठीक है। C आपने देख लिया कि इट वाज इक्वल टू 0.5 FC into 0.5 BH, correct? And T is equal to 0.5 FT into 0.5 BH, ठीक है जी। अब इसमें जो मैंने आपको कहा कि रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो ये कपल जो इंटरनल प्रोड्यूस होता है, दिस कपल वी विल कॉल एज MR, एंड दिस MR, हम चूंकि टेंशन में इंटरेस्टेड है कि बीम टेंशन में फेल होगा, कंप्रेशन में तो फेल नहीं होगा, तो हम टेंशन की इक्वेशन को लिखते हैं 2/3 into H, करेक्ट। अच्छा, अब T की वैल्यू आप इसमें डालें, MR इज इक्वल टू, T की क्या वैल्यू है, 0.5 FC into 0.5 BH into 2/3 H। इसके आप फाइनल मुझे बताएं कि MR की क्या वैल्यू निकली। वन बाय 6 FH²। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखें ये 1/2 होगा, दिस इज 1/2 एंड दिस इज आल्सो 1/2, तो ये 1/2 A2 तो H2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे 6 आ जाएगा, और ये होगा FC, ये B है,
FCB H square डिवाइड बाई 6, करेक्ट? ठीक है जी। Yes, sir. यस सर। अच्छा ये FC नहीं है सॉरी, ये FT है, आई एम सॉरी, दिस इज FT, क्योंकि हम T लिख रहे हैं ना, तो ये आप करेक्ट करें, दिस इज T, ये T है, ये T, टेंशन, ठीक है। अच्छा अब हम जो है कोई बीम हमारे पास है, कंक्रीट का बना हुआ है, और मुझे FT मालूम है कि FT असल में क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि FT, चूंकि ये इस बात को आप गौर से सुने, इस वक्त हम कैपेसिटी मालूम कर रहे हैं बीम की, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ द बीम। तो ये FT जो है, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, maximum stress which this lower part of the beam, which is made of concrete, can resist. तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो नीचे ये रिजिस्ट कर सकता है, जाहिर है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने, अगर आपको याद हो, पिछले इसमें एक मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो FR था। ACI कोड आपको डायरेक्ट कहता है कि आप, अगर आपके पास स्ट्रेस डेटा ना हो, तो आप इस FR विच इज FT, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप 7.5 टाइम्स FC प्राइम स्क्वायर रूट से आप इसको मालूम कर सकते हैं। आप मुझे एक कंक्रीट है जिसकी स्ट्रेंथ FC प्राइम 3000 PSI है, मुझे आप इसकी FT या इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं, ये आप मालूम करके बताएं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर tensile strength, or this is also called as modulus of rupture. मतलब ये है कि जब इधर स्ट्रेस नीचे, जो कंक्रीट में नीचे फाइबर में स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इस वैल्यू से बढ़ जाएगा, तो ये इधर क्रैक हो जाएगा, ठीक है, ये क्रैक हो जाएगा। तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई 7.5 टाइम्स FC प्राइम। मुझे आप बताइए कि 3000 PSI कंक्रीट के लिए फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 410.8 PSI। बिल्कुल ठीक है। FR will be equal to 410 PSI, और KSI में अगर हम इसको करेंगे तो ये 0.4 KSI हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है। यस। अब आप देखें कंक्रीट की स्ट्रेंथ 3000 PSI है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 PSI। इट्स ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ के तकरीबन 8 to 9 टाइम्स है, 8 टाइम्स दिस इज 3000 PSI, करेक्ट? ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव हेड नाउ। FT की अगर हम ये वैल्यू लगा दें इधर, FT की ये वैल्यू लगा दें इधर, तो MR हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। बिकॉज फॉर एनी विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम, हम किसी भी विड्थ और डेप्थ ऑफ द बीम के लिए अगर हमारे पास FR मौजूद हो, तो हम बीम की कैपेसिटी MR निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप लेट्स से हमारे पास एक बीम है जिसकी विड्थ है B 12 इंच और बीम की डेप्थ है 18 इंच। आप इसके लिए MR मालूम करें, रेजिस्टिंग मोमेंट। एंड ये बात आप गौर से सुने कि ये सिर्फ प्लेन कंक्रीट स्टेज नंबर 1 पे रीइंफोर्समेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कोई क्रैक नहीं है, तो उसके बाद स्टील की कंट्रीब्यूशन शुरू होगी। तो ये आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि जैसे बिल्कुल प्लेन कंक्रीट बीम हो। तो प्लेन कंक्रीट बीम की रेजिस्टिंग कैपेसिटी या रेजिस्टिंग फ्लेक्सर कैपेसिटी या फ्लेक्सर लोड कैरिंग कैपेसिटी आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब आप FT की वैल्यू 410 PSI या 0.4 KSI डाल दें, और B की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 18, और इससे मुझे आप बताएं कि MR की वैल्यू क्या आ रही है। आपने पास इसको नोट करें।
और भी कुछ ट्राई करें आप लोग। ये आपने KSI में निकाला? नहीं सर, PSI में। नो सॉरी सर, दोबारा ये करें आप। PSF में निकाला। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या होगा? अच्छा, इसको मैं जरा कर लेता हूं, आप जरा इसको देखते रहें। 9.2 सर। Let me do this. MR will be equal to FR into BH square divided by 6, and FR we have calculated that this is equal to 0.4 KSI. मैं यूनिट साथ लिखता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। ये के पर स्क्वायर इंच को मैं इस तरह लिखता हूं आप आसानी के लिए। B 12 इंच है और H 18 इंच स्क्वायर हो जाएगा। 18 इंच तो ये स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 है। तो इसका जो स्क्वायर इंच है ये तो इस स्क्वायर इंच के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 259.2 इंच के पैकेट इंच, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, अब लेट से आपके पास एक कंक्रीट बीम है, इसमें रिइंफोर्समेंट नहीं है, ठीक है, और बीम की लेंथ है 7 फीट। और विड्थ और डेप्थ तो आपने ये मालूम कर ली कि विड्थ और डेप्थ, ये इसी बीम की मैं बात कर रहा हूं, 12 और 18 इंच की डेप्थ है, ठीक है। तो आप क्या वो पी निकाल सकते हैं कि जो आपको जिससे जो इसकी मैक्सिमम लोड पी आप निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? अब आप देखें इसको कि हमारे पास अगर एक बीम है कंक्रीट का जिसकी विड्थ और डेप्थ, ये इसको मैं 3D में कर देता हूं ताकि आप लोग इसको सही तरह से समझ जाएं। ये इसकी विड्थ है 12 इंच और ये 18 इंच इसकी डेप्थ। ये कंक्रीट का बना हुआ है, इसमें कोई स्टील नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो अब इस बीम पे मैं लोड अप्लाई करता हूं P। मैं चाहता हूं कि मैं वो लोड P मालूम करूं जिस पे मेरा बीम फेल हो जाए। तो मैं कैसे मालूम करूंगा? मुझे पता है कि ये रिएक्शन P/2 आ जाएंगे और मैक्सिमम इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मिड स्पैन पे होगा, जिसकी वजह से ये फेल होगा, और वो M इज इक्वल टू PL/4 होगा। लेट्स से बीम की लेंथ जो है ये 10 फुट है, 7 फीट मैंने कहा, लेकिन चलो 10 फुट है, बीम की लेंथ 10 फुट, ठीक है जी। तो ये कौन सा, ये डिमांड बेंडिंग मूवमेंट है जो ये बीम की, लेकिन इसकी कैपेसिटी हमने अभी मालूम की है, वो MR के बराबर है। जब MR रेजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट इस बेंडिंग मूवमेंट के बराबर हो तो ये बीम फेल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू से बढ़ जाएगी तो बीम फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम P मैं मालूम कर सकता हूं इस इक्वेशन से, जब MR इस PL/4 के बराबर हो, और MR मैंने भी मालूम किया वो 259.2 इंच के निकला। अब आपके पास L की वैल्यू 10 है तो P आप मालूम कर सकते हैं, P मैक्सिमम, इससे ज्यादा ये कंक्रीट का बीम ये P नहीं उठा सकता। ये कैसे होगा? 259
0.2 inch kip मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 10। तो जी आपसे क्योंकि ये एल इंच में एल 10 जो है फुट में है, ये एल फुट में है, तो ये इंच में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप पी निकालें, कितना पी आपका निकला? 8.64 जी 8.64 8.64 क्या चीज, यूनिट बता दी जाए। किप किप में आ गया 8.64 किप क्या चीज है, मुझे आप बताएं। ये मैक्सिमम लोड है जो बीम उठा सकता है, तो इसी को डिजाइन कहते हैं। दिस इज द डिजाइन। यानी आपने मालूम कर लिया कि ये पी है इसका। अब आप नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बीम विदाउट रीइंफोर्समेंट, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? एमआर को बढ़ाने से। एमआर जब बढ़ाएंगे तो आप इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और एमआर आपको पता है कि ये किसके बराबर है? एमआर बराबर है एफ आर के, एफ आर इंटू बी एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 6। तो आप एफ आर को बढ़ाएं या बी को बढ़ाएं। एच को बढ़ाने से एमआर बहुत बढ़ेगा क्योंकि स्क्वेयर से बढ़ेगा, बी से इतना नहीं बढ़ेगा, एच से बहुत बढ़ेगा। स्क्वेयर ऑफ यानी सेक्शन, अगर आप 18 इंच को 19 इंच भी कर देंगे तो इसका बहुत इफेक्ट है, और बी को 12 से अगर आप 15 इंच भी कर दें तो इसका इतना इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और एफ आर जो है, एफ आर किस चीज से बढ़ेगा? एफ आर एफ सी प्राइम से बढ़ेगा, क्योंकि एफ आर इज इक्वल टू 7.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी प्राइम। तो एफ सी प्राइम बढ़ने से एफ आर बढ़ेगा, ज्यादा इफेक्ट इसका एच पे आएगा। यहाँ आप डेप्थ बढ़ाएंगे तो एम आर बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ए प्लेन कंक्रीट बीम जब हम कोई रिइंफोर्समेंट नहीं बढ़ाते। अब आपके पास ये एक कैलकुलेशन आ गई, ये कैलकुलेशन अपने पास रखें, एंड देन वी मूव अहेड टू स्टेज नंबर 2। ये स्टेज नंबर 1 की कैलकुलेशन हमने कर ली। अच्छा, स्टेज नंबर 1 पे 2-3 चीजें और। जी एम आर जो है इसको क्रैकिंग कैपेसिटी बी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आपका एम डिमांड बेंडिंग मूवमेंट एम इस एम आर से बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि बीम में क्रैक आ जाएगा, बीम में क्रैक आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम एम आर को हम एम सी आर भी बाज़ वक़्त कहते हैं कि ये बीम की क्रैकिंग कैपेसिटी है। यानी ये वो कैपेसिटी है कि जिसके बाद जब बीम पर लोड हम डालेंगे और इस क्रैकिंग कैपेसिटी से ये एम बढ़ जाएगा तो बीम में क्रैक आ जाएगा। लिहाजा अगर हम बीम में कोई क्रैक नहीं चाहते, बिल्कुल कोई भी क्रैक नहीं चाहते, तो हमारी क्रैकिंग कैपेसिटी जो है ये इससे कम ना हो, इस डिमांड बेंडिंग मूवमेंट से कम ना हो। अगर क्रैकिंग कैपेसिटी इससे कम होगी तो बीम में क्रैक आ जाएगा। लेकिन हम बीम इस तरह डिजाइन नहीं करते कि इसमें क्रैक ही ना आए, क्योंकि इट विल बिकम वेरी वेरी अनइकोनॉमिकल, और सिर्फ प्लेन कंक्रीट से इसको बनाना इट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। So this is the relevant calculations corresponding to stage number 1 when there is no cracking, and it's, in other words, it is a plain concrete beam without any reinforcement. So these are the equations in the calculations, relevant calculations. सर एक ब्रेक दे दे स्टेज नंबर 2 ब्रेक के बाद। Okay, we take a break, please. 10 minutes break up, please. ओके सर, प्लीज। जी सर। एक ब्रेक आप ले लें 10 मिनट का, फिर इंशाल्लाह स्टेज नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं।
Okay. Ask students to join the class again. We are going to resume class in a while. We will discuss now stage number 2. Okay, let's discuss stage number 2. At stage number 2, the beam cracks on the tension side is shown in this figure. The internal stress state of the beam will be such that concrete is now not capable of taking any tension. The steel bars which have been placed are taking all the tensile stresses. However, concrete in the compression zone is still capable of taking the compression stresses. So the situation is like this now. In the lower part of the beam, you can see that concrete is not contributing. It is only steel which is taking all the tensile stresses. So if we now draw this diagram and a 2D stress state, it will be like this. This will be C compression because there is no concrete contribution coming. So this will end here and there will be tensile stress entirely resisted by steel bars now. This is C and T. Okay? So we will discuss this now like this. The concrete beam cross section, B is the width of the beam, H is the depth of the beam. And as I said earlier, D is the effective depth of the beam from the top compression fibers to the centroidal axis of the reinforcing bars. This green zone is compression zone, and this white zone is tension zone in which concrete is completely cracked. And since stresses cannot transfer across the crack, so contribution from concrete has ended, and now it is only the steel which is resisting tensile stresses. This is the strain diagram. In the strain diagram, the strains in concrete in the compression zone are such that strain in the tap fibers are still less than 0.0003, and stress in steel is such that it is less than the yield strain. The strain in steel is less than the yield strain, and strain in concrete is less than 0.0003. Corresponding to this, the stress diagram is such that in the extreme fibers, concrete is subjected to a compressive stress equal to 0.45 C prime, where F C prime is the compressive strength of concrete. So if we now look at this stress diagram of concrete in the compression zone and compare this with the stress strain diagram of concrete, we can see that the stress state in stage number 2 is such that FC is equal to 0.4 F5 FC prime. And since this is FC prime, so it is almost half of this, and we are at this stage. So we are just entering into non-linear range, but still we can assume with quite good accuracy that up to 0.5 FC prime, the stress and strains are still proportional in concrete on the compression side. So stress and strains are still proportional. And after this, the proportionality will be still there, but it will not be linear. It will be non-linear proportionality. So in other words, FC is proportional to strain in steel linearly power 1, but after this it may not be linearly proportional. It may be proportional, non-linear proportional with the strain in concrete with the power of 1.2, 1.3, or maybe 2. So this proportionality is there. It will be a non-linear proportionality. Okay, this is the concrete, and the maximum stress in concrete and the compression side is 0.45 C. How do we know this? Actually, this is a stage. We assume that at this stage number 2, there can be a situation where FC is equal to 0.45 FC prime, and we are going to discuss that stage. Okay, and then steel stress on the tension side is such that it is 0.5 Fy, half of the yield strength. And if we compare this with the stress strain diagram of steel, we are at this stage, half of the yield strength. So steel is in linear elastic stage because still
stress in steel is proportional to strain. We know that up to yield strain or yield strength, the steel stress and strains are proportional. So steel is in the linear elastic range. Steel stress is proportional to strain, and corresponding to this stage number 2, let's assume that stress in steel is such that it is equal to 0.5 Fy. So this is the stress stage. Okay. Next, now we will try to write down the equations, and I will try to write down this equation for you on a white screen like this. Now look at these equations. The stress diagram is such that you have a C here and you have a T here. Now the distance, effective depth D from the top of the beam, top compression fibers of the beam to central axis of the steel is this D, and you have T here. Now this is an important point to note, that the depth of this compression zone of the concrete is now is not equal to h/2 now. It is equal to some distance c, small c, but this distance is not known to us. We do not know what this distance is equal to. Okay, because in the previous case, the total section was in linear elastic stage. There was no cracking and the tension side in concrete beam. So the neutral axis was at the mid depth. But since in this case, concrete has cracked substantially on the tension side, which means that the neutral axis would have shifted upwards, because the concrete on the tension side is not capable of resisting any tensile stresses, and it is only steel now which is resisting all the tensile stresses. So neutral axis will not remain at the mid depth; it will shift upwards. It will shift upwards, and this shifting upward will basically now create a situation where the neutral axis depth from the top fiber is small c. This is the neutral axis depth, and this depth is not known to us in this particular case. Okay, C is now equal to what? This is 0. This is FC. FC equal to 0.45 FC prime. Okay, C again is FC plus 0. FC plus 0 divided by 2. FC plus 0 divided by 2, because you have maximum value FC here and 0 here. So it will be 0.5. 0.5 FC will be the average stress. Average stress. But what will be the area at which this C is acting? The area in this case is not BH/2. The area in this case is B times this small c depth. This depth. Okay? This C. This is not the h/2. This is small c, not the capital C. So this is the compressive force. C is equal to 0.5 FC into BC. And T will be equal to AS into Fs. AS is the steel area, the area of the steel bars, and Fx is equal to 0.5 Fy. So T will be equal to AS into 0.5 Fy. Correct? And the resisting couple, in this case, Mr will be equal to how much? Mr will be equal to T into the lever arm. This is the lever arm. And this lever arm will be equal to total D minus this distance. And this distance will be equal to, if this total depth of the compression zone is C, small c, then the compressive force depth from the top fibers will be C by 3, 1 by 3 of C, and this will be 2 by 3 of C. As I said earlier, that in the triangular stress variation, the resultant will act at 1/3 of the distance from the maximum stress location and 2/3 from the zero stress location. So this will be T into D minus C by 3. Okay, correct?
And T is equal to ASFY. So MR will be equal to 0.5 ASFY into D minus C by 3. C is small c, okay, not capital C. Okay? If you want to calculate MR for a particular beam, let's say in the previous beam whose depth was 18 inch, we can do so if we know AS, because everything else is known. Fy is the yield strength, so if we are using grade 40 steel, Fy will be 40. If we are using grade 60 steel, so this is our decision, we can do this. So Fy is known to us. D, if we know the total depth of the beam, we can decide at which location the steel bars will be placed, so effective depth can also be calculated from the size of the beam, not a problem. But what about C? C is not known to us. Small c is also not. AS is also not known to us because AS is to be calculated and C is also. These are two unknowns, AS and T. Okay. Now let's move ahead with this. You should write down this equation is equation number 1. Okay, let's say this small c, if we know small c, then we can calculate AS. We can calculate AS for the demand bending moment. Okay, let's say this is the same beam which we were discussing in the previous case, that the beam has width equal to 12 inch and the depth is total depth is 18 inch. Okay, and there is a point load on the beam. Okay, and this will give you some bending moment which we called as demand bending moment, this M. Okay, I will denote this demand bending moment by MU because it will be very frequently used in the coming slide. MU is the, let's say, demand bending moment, which is PL by 4. What we did in the previous case, in the stage number 1, we equated MU to MR. We said that if MR is equal to MU, the beam is not going to collapse or the beam is not going to crack. Okay, and MR in the previous case, stage number 1, was equal to how much? It was equal to FR BH square by 2 is equal to MU. So if I ask you to determine FR, BH, provided that BH are known to you, okay, to calculate FR for a given MU, so you can do this very easily. You will write down that FR is equal to MU divided by BH square by 2. So you will be able to calculate FR corresponding to a given MU. Okay. So if an MU is more, you will need more FR. If MU is less, you will need less FR value, which is FR is equal to 7.5 FC prime. Because FR is the modulus of rupture, it totally depends on the compressive strength of concrete. So you will have to increase, you will have to keep on increasing compressive strength of concrete in order to increase your capacity MU. Okay, this is one thing. The second thing is, if you do not want to increase FR and if you want to increase H, so you can write down this equation in terms of for H, you can write down this equation in terms of B and FR like this. H, if you want to calculate H for this MU, so it will be MU divided by 2 FR सर ये b square by 6 नहीं होगा सर? B square by 6 is sorry B square by 6, yes. So whatever variable you want to calculate from this equation, you can calculate provided you know MU.
अगर आपको एमयू का पता हो, क्योंकि एमयू तो आपको मालूम होगा, आपको अपना लोड पता होगा कि मेरा लोड क्या है। जब आपको लोड मालूम हो और बीम की लेंथ भी पता हो, तो आप जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उससे आप एमयू मालूम कर सकते हैं, और फिर आप अपना बीम की वेड्थ या डेप्थ एक चीज़ को एज्यूम करके दूसरी आप निकाल सकते हैं। ये डिज़ाइन का तरीक़ेकार है, इसी से हम डिज़ाइन करते हैं। ये स्टेज 1 के लिए मैं कर रहा था। अच्छा, स्टेज 2 में अब सिचुएशन डिफरेंट है। स्टेज 2 में सिचुएशन इज डिफरेंट। स्टेज 2 में एमयू तो आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि एमयू तो डिमांड है, लेकिन आपका रेजिस्टिंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? एमयू विल नॉट चेंज बिकॉज एमयू इज कमिंग फ्रॉम लोड, बट एमआर हैज चेंज। एमआर स्टेज में क्या है? एमआर स्टेज पे क्या है? एमआर इज ASFS है T, MR is T into D minus C by 3, स्मॉल c by 3, और T है ASFS के बराबर। और FS हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि FS is equal to 0.5 FY। तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा? 0.5 ASFY इंटू D माइनस C by 3। ये MR की वैल्यू आ जाएगी स्टेज नंबर 2 पे। अच्छा, अब अगर इस MR को मैं MU के बराबर कर दूं, यानी इफ MR इज इक्वल टू MU, तो जैसा कि एक आप में से किसी ने क्वेश्चन किया कि MR जब MU के बराबर होगा तो बीम फेल होगा, तो नहीं फेल होगा। तो मैं अगर MR को MU के बराबर कर दूं और इससे मैं AS मालूम करूं और इस AS को इसके अंदर डाल दूं, तो बीम फेल नहीं होगा। करेक्ट? ठीक है ना? इस MR को मैंने इस इक्वेशन से लिखी रेजिस्टिंग कैपेसिटी और MU डिमांड है। अगर इस दोनों इक्वेशन को मैं आपस में, इन दोनों चीज़ों को मैं आपस में इक्वेट करूं, रेजिस्टिंग कपल को जो कि हमारे पास बीम के अंदर मौजूद है, और MU जो डिमांड है, अब ये उस वक्त मौजूद होगा जब आपके पास रिक्वायर्ड एस होगा। तो रिक्वायर्ड एस में से मालूम कर सकता हूं कि मैं AS को इन टर्म्स ऑफ दिस मालूम करूं, MU AS इज इक्वल टू MU डिवाइडेड बाई 0.5 FY D माइनस C by 3। अब अगर मुझे C पता हो तो MU तो मेरा डिमांड है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मैं मालूम करूंगा। FY मेरे पास ग्रेड 40 या 60 स्टील होगा, तो मैं वो AS मालूम कर सकता हूं, जबकि जो मैं कि स्टील बीम के अंदर डाल दूं तो बीम इस MU को उठाएगा और फेल नहीं होगा। अब आप MU को उठाते, MU को जब आप इंक्रीज करते जाएंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट? यू कीप ऑन इंक्रीजिंग MU बिकॉज इफ यू इंक्रीज P, MU विल इंक्रीज। तो क्या होगा? विद इंक्रीज इन MU, AS आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है? यस सर। AS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MU, एंड MU किस चीज से बढ़ता है? MU आपका P से बढ़ता है। जब आप लोड बढ़ाएंगे, अगर लेंथ सेम हो तो P बढ़ाने से आपका MU बढ़ेगा, और MU बढ़ने से आपके फिर AS का डिमांड बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, अब इसमें अगर ये स्मॉल c हमें पता चल जाए तो हम AS मालूम कर सकते हैं, वी कैन डिजाइन दिस बीम। तो स्मॉल c हम कैसे मालूम करेंगे? स्मॉल c हम ऐसे मालूम करेंगे दैट वी हैव अनदर इक्वेशन इन दिस स्टेज नंबर 2। वो c आप t के बराबर ले लें। ये इक्वेशन अपने पास लिख लें, दिस इक्वेशन, राइट डाउन दिस इक्वेशन, AS इज इक्वल टू MU डिवाइडेड बाय 0.5 FY D minus C by 3, and we will write down the other equation now. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, ओके। अब देखिए इसको, जब C हम T के बराबर लेते हैं तो हमने कहा कि C हमारे पास है 0.5 FC के बराबर है, 0.5 FC, और उसका एरिया है B टाइम्स स्मॉल c, क्योंकि बीम की टोटल डेप्थ हाफ डेप्थ अब कंप्रेशन जोन में नहीं है, सिर्फ C पोर्शन जो है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ऊपर, जिसको मैंने C कहा है, उसके बराबर है। और ये बराबर है इसके AS FS के बराबर है, AS FS के बराबर, और FS जो है 0.5 FY। अच्छा, अब इसमें
FC बताते खुद क्या है, FC इज इक्वल टू 0.45 FC प्राइम into B into C, and this AS is not known to us, but FS is 0.5 FY. इससे आप C निकालें, small c की वैल्यू निकालें. This 0.5 will be cancelled with this 0.5, and you will be left with AS FY divided by what? Divided by 0.45 FC prime and B. This is your equation number. If this was equation number 1, this will be equation number 2. ठीक है? If this was your equation number 1, this will be your equation number 2. अच्छा, अब आप बीम को डिजाइन कर सकते हैं. कैसे डिजाइन करेंगे? जिसके 2-3 तरीके. या तो आप इस सी की टोटल इस वैल्यू को आप इधर डाल देंगे और फिर इधर आपके पास एस आ जाएगा, और ये फिर आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एस इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा. लेकिन हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं, आप लोग कर सकते हैं. लेकिन मैं इसको एक आसान तरीके से करूंगा. वो ये कि सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 में सी की कोई वैल्यू एज्यूम करता हूं. अगर मुझे मेरी बीम की डेप्थ 18 इंच है, ठीक है ना, टोटल डेप्थ 18 इंच है, मुझे पता है, तो सी कितना होगा? सी हाफ से तो कम है, 9 इंच से कम होगा. तो लेट्स से मैं सी की 5 या 6 इंच की वैल्यू एज्यूम करता हूं. ठीक है? जब आप सी की 5 या 6 इंच की वैल्यू एज्यूम करेंगे तो आप एस आपके पास आ जाएगा. वो एस जब आप इस इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा, और उस सी को आप दोबारा जब इधर डालेंगे तो आपके पास ये एक लूप बन जाएगा, और इस लूप में एक स्टेज ऐसे आ जाएगा कि आपका सी और एस मजीद नहीं चेंज होगा. दैट विल बी योर एस रिक्वायर्ड. इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड सक्सेस मेथड. जब आपके पास 2 वेरिएबल्स हों और एक को आप in terms of one and other in terms of another, you can express this. Because everything else is known to us in this equation. Mu is coming from bending moment diagram, Fy is known, D is known, C is not known. C we will assume C, and then once AS is calculated based on this assume C, we will substitute that AS in the other equation number 2. Fy is known to us, Fc prime is known to us, B is known, we will calculate the C. This C will be again substitute in equation number 1, and we will run this loop, this cycle twice or thrice, and then we will reach a value where AS and C will not change, and that will be the value of AS which will be required for this beam to be placed inside the beam in order to resist this MU. Any question on this? इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप जरा गौर से सुने कि हम इंटरनली बीम की एक रेजिस्टिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं इंटरनल मैकेनिक्स से. ये नीचे स्टील है, उसके अंदर टेंशन है, वो ASFS के बराबर है, क्योंकि जो एरिया ऑफ स्टील है उसको जब आप स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10T आ गया. ऊपर सी है, ऊपर सी जो है उसका एवरेज स्ट्रेस 0.5 FC है, और उसका एरिया जो है वो विड्थ ऑफ द बीम है, और ऊपर कंप्रेशन जोन की डेप्थ स्मॉल सी है, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 FC BC निकाल दिया, और T जो है वो ASFS के बराबर है. और मैंने कहा कि इस वक्त जो स्टेज है स्टेज 2, उसमें FS 0.5 FY के बराबर है, और ऊपर FC जो है वो 0.45 C प्राइम के बराबर है. अब इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जब C को T के बराबर हम कर लेते हैं तो हम इससे C निकालते हैं, जिस तरह के ये आपको इक्वेशन नजर आ रहा है. और MR को जब MU के बराबर करते हैं, क्योंकि MR जो है वो रेजिस्टिंग कैपेसिटी, MU इसके ऊपर आपने लोड डाल के डिमांड वो P से आएगा. तो जब आप रेजिस्टिंग कैपेसिटी, आप कहते हैं कि बिना बीम फेल ना हो, तो कैसे फेल नहीं होगा? जब आपकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी डिमांड के बराबर हो तो फिर फेल नहीं होगा. जब आप उसको बराबर कर लेते हैं और वो AS मालूम करें जो इस AMU के करस्पॉन्डिंग आपको AS निकाल कर दे दे, तो बस इस पर ये, और वो AS आप इसके अंदर डाल दें तो ये इस MU को उठा लेगा जो MU की इस P से आ रहा है. एंड विद द इंक्रीज इन P, MU विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, and with the increase in MU, the AS required will also keep on increasing. तो एरिया ऑफ स्टील जो है आपकी क्वांटिटी स्टील की बढ़ती जाएगी जितना कि आपका डिमांड MU का बढ़ता जाएगा, और MU P से आ रहा है, या लेंथ बढ़ाने से या P बढ़ाने से आपका MU बढ़ेगा.
This is stage number 2, equation corresponding to stage number 2. Okay. ठीक है जी. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा, आज हम स्टेज नंबर 3 पर नहीं जाएंगे. स्टेज नंबर 3 वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. लेकिन अब इसमें आप जरा क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन करें. इसमें एक चीज ये है कि देखिए स्टेज नंबर 2 में वी हैव टेकन एफ एस इक्वल टू 0.5 एफ वाई. तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? एनी वन ऑफ यू who can tell me? We are taking f is equal to 0.5 fy. What does it mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम स्टील को यील्ड तक स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उसके हाफ तक स्ट्रेस कर रहे हैं. यानी स्टील की हाफ कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर रहे हैं और हाफ हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड. यानी स्टील अभी यील्ड तक जा सकता है और हम कहते हैं कि नहीं, ये हाफ स्ट्रेस से न बढ़े आगे, और एफ इज इक्वल टू 0.5 एफ हम डिजाइन करेंगे. इसका नतीजा ये होगा कि आपके पास ज़्यादा ए रिक्वायर्ड, आपको ज़्यादा स्टील रिक्वायर्ड होगा. लेकिन अगर आप ए एस उस कंडीशन के मुताबिक मालूम करें जिसमें एफ एस इक्वल टू एफ वाई हो, यानी स्टील को आप मजीद लोड करें और आप मजीद लोड डाल के एफ एस एफ वाई के बराबर कर दें, तो आपका ए एस कम हो जाएगा. तो हम स्टेज नंबर 3 पे जब डिज़ाइन करेंगे तो हम उसमें एफ एस एफ वाई के बराबर लेंगे. ठीक है. ओके सर. और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को और भी अगर सर- आप देखें तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी हम 0.45 एफ सी प्राइम तक ले रहे हैं, तो हम फुल एफ सी प्राइम पर जाएंगे उसमें. तो हम कंक्रीट की फुल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूटिलाइज करेंगे और स्टील की फुल यील्ड स्ट्रेंथ यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. लेकिन जब हम उस स्टेज पे जब ये करेंगे तो हम उसमें वी विल बी कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी. ठीक है. तो हम सेफ्टी को कवर इस तरह करेंगे कि हम अपने डिमांड एमयू को थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा एनहांस कर देंगे, और इस फ्लेक्चर कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, जिससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल होगा. ये जो स्टेज नंबर 2 है, ये असल में वर्किंग स्ट्रेस अप्रोच है. वर्किंग स्ट्रेस अप्रोच जिसमें हमने कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी हाफ लिया है और स्टील की स्ट्रेंथ को भी हाफ लिया हुआ है. लेकिन इस पर हम डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, एमयू को हम इनहांस नहीं करेंगे. हम कहेंगे कि हाँ बस जितना डिमांड है एक्चुअली वही डिमांड है, हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करते हैं. हाफ स्ट्रेंथ पे हम ये डिजाइन कर रहे हैं. तो दिस बेसिकली स्टेज नंबर 2 इज करस्पॉन्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस अप्रोच. तो यू स्टडी दिस अप्रोचेस एंड जो कैलकुलेशन आप आज हमने की, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल बी स्टडिंग स्टेज नंबर 3 को हम फिर आगे मजीद स्टडी करेंगे. एंड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस करें. बिगिनिंग में जो वीडियो मैंने आपको दिखा दी उससे लेकर अब तक जो भी आपको क्वेश्चंस हो, यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. वी हैव टाइम एंड आई वांट टू गिव यू सम टाइम फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है. इस वक्त जो है आप जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज इट विल हेल्प यू डेवलपिंग योर कंसेप्ट. So better you ask your questions, whatever you feel that it is not clear to you, what questions that arise in your mind, you can ask without any hesitance, please. आप लोगों ने इसमें देख लिया कि बुनियादी तौर पर हम रेजिस्टिंग कपल को डिमांड कपल के डिमांड बेंडमेंट के बराबर करेंगे और उससे फिर ए एस निकालेंगे. इसको हम डिजाइन करते हैं या ए एस निकालेंगे. और प्रीवियस केस में चूंकि ए एस नहीं था स्टेज नंबर 1 में, तो उसमें हमने एफ आर हमने या निकालेंगे या बीम का सेक्शन निकालेंगे ताकि बीम फेल ना हो. जी, आस्क क्वेश्चंस नाउ प्लीज. एनी क्वेश्चन?
No questions? No, sir. Okay, if there are no questions, then I think we should end our lecture at this stage, and we will discuss stage number 3 in the next lecture, because most of the time in the coming lectures we will be discussing the stage number 3, not stage number 1 and 2, because stage number 1 and 2 will give you a basic concept. That's why we have discussed stage number 1 and 2 in quite detail and depth. However, stage number 3 is the most important stage, and it is this stage which we will be utilizing in our designs. Okay, we will discuss this next time. Thank you. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.